Look at this. Yesterday we were discussing about different types of relations. We have seen empty relation, universal relation. empty relation मतलब एक सेट के अंदर का एक एलिमेंट किसी भी एलिमेंट को रिलेटेड नहीं, कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट को रिलेटेड नहीं. That means phi, that is empty relation. Universal relation matlab the relation is A cross A itself. Means if a relation in A is said to be a universal relation, if that relation contains all the elements of A cross A. That matlab every element or each element of that set is related to every element of the other set. Then we have seen three different types of relation: reflexive, symmetric, and transitive. A relation on a set is said to be reflexive if every element is related to itself, A related to A. Symmetric matlab A related to B. If A is related to B, then B should be related to A. Symmetric. And transitivity matlab if A matlab one element is related to second element is related to third element, then the first element is related to third element. That is known as transitive relation. And if a relation is all these three, a relation R is said to be equivalence relation if it is reflexive, symmetric, and transitive. A relation reflexive भी है, symmetric भी है, transitive भी है. ये तीनों है तो हम बोल सकते हैं it is an equivalence relation. Yesterday we have seen one example. Your set is, मैंने बोला था set of all triangles in the world or whatever, set of all triangles in the universe. Then the relation was similar to. Then we have seen that every triangle is similar to that triangle itself, so it is reflexive relation. If one triangle is similar to second triangle, then the second triangle is similar to the first triangle, so symmetric. If one triangle is similar to second triangle is similar to third triangle, then automatically first triangle is similar to third triangle, so transitive. That's similar to relation in the set of triangles. It is reflexive, symmetric, and not transitive, so it is equivalence relation. Now see another example. Your set is a set of all triangles in a plane. Your relation is set of all ordered pairs t1 comma t2. T मतलब set of all triangles का set है, so सभी ordered pair t1 t2 आएगा if the triangle 1 is congruent to triangle 2. That means your relation is congruent to, this is your relation, congruent to. So question is show that R is an equivalence relation. So this is very clear, like every triangle is congruent to itself, so it is reflexive, isn't it? Then if T1 is congruent to T2, then second triangle is congruent to T1, correct? And you can write in your own words. Then third one, if T1 first triangle is congruent to second triangle and second triangle is congruent to third triangle, then automatically first triangle is congruent to third triangle. Are you getting my point? Simple example say. So this relation congruent to in the set of triangles in the plane, it is an equivalence relation because that relation is reflexive, symmetric, and transitive. Is it clear? Do I need to explain it again? Hello? No, sir. Did you understood? Understood or not? Yes, sir. Yes, sir. Okay, next example देखो. This is like a set of all lines. A relation is like this.
सभी ऑर्डर्ड पेयर्स सच दैट L1 L2 रिलेशन में आएगा और L1 is related to L2 if L1 is perpendicular to L2. So relation is perpendicular to. So without looking at the answer, can you say whether this relation is reflexive? Reflexive है तो क्या होना चाहिए? खुद को relate होना चाहिए. But we know that one line cannot be perpendicular to itself. एक लाइन खुद को perpendicular नहीं ना. So it is not reflexive. The relation is not reflexive because reflexive है तो every element should relate to that element itself. So our relation here is perpendicular to. So as per if reflexive होना है तो every line should be perpendicular to that line itself, but it won't happen because a line cannot be perpendicular to itself. So it is not reflexive. Then we know that symmetry क्या क्या check करना. If L1 is perpendicular to L2, first line is perpendicular to L2, then automatically L2 is perpendicular to L1. So that means it is symmetric. अभी ट्रांसिटिव है क्या? ट्रांसिटिव है तो ऐसे होना चाहिए कि देखो L1 perpendicular to L2 and line 2 perpendicular to line 3. Then L1 परपेंडिकुलर टू L3 होना चाहिए ट्रांसिटिव है तो, बट L1 परपेंडिकुलर टू L3 है क्या? इट इज नॉट, बिकॉज देखो इधर फर्स्ट लाइन इज परपेंडिकुलर टू सेकंड लाइन and second line is perpendicular to third line, then the first and third lines are not perpendicular, they are in fact they are parallel. Yes, sir. So transitivity is not there. So this relation perpendicular to in the set of lines in the plane, this relation is not reflexive, but the relation is symmetric, but relation is not transitive. Question was show that R is symmetric. So it is clear if one line is perpendicular to another line, then if one line is perpendicular to second line, then the second line will be automatically perpendicular to the first line. So it is symmetric, but it is not reflexive or not transitive. मान लीजिए if the question is to just check whether it is an equivalence relation or not, अब तीनों चेक करने का कोई जरूरत नहीं, आपने पहले रिफ्लेक्सिव चेक किया. if it is not reflexive, directly you can write the answer there as the relation is not equivalence relation, because equivalence relation होना है तो reflexive, symmetric and transitive तीनों होना चाहिए. अगर उसमें से कोई भी एक नहीं है तो then it is not equivalence. Okay. Yes, sir. Then this fourth example, then we will go to board. Actually board में लिखेंगे. अभी this fourth example भी देखो. Show that the relation on a set, so your set is given as 1 2 3, your set is set 1 2 3. These are simple examples to understand the concept, that's all. Set 1 2 3, and they also gave you the relation. So you know that there are relation मतलब A cross A का subset A cross A में 3 into 3 9 elements. So 9 elements A cross में है, so 2 to the power 9 उतना relation से A में, means from A to A 2 to the power 9 relations are there. उसमें से एक relation दिया है 1 1 से कार्टेशियन फॉर्म में दिया है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3. सो हमें शो करना है कि इट इज रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्सिव है तो हर एक एलिमेंट खुद को रिलेट होना चाहिए,
That means 1 should be related to 1, 2 should be related to 2, 3 should be related to 3. There are 3 elements in that set. All the 3 elements should relate to that itself. So look at the relation. In the relation they gave 1 comma 1 is there, that means 1 is related to 1. 2 comma 2 is there, that means 2 is related to 2. 3 comma 3 is there, that means 3 is related to 3. That means every element of the given set is related to themselves or Itself. itself. So it is reflexive. So you can write R is reflexive since 1 1 2 2 and 3 3 lie in R. अभी सिमेट्रिक ये क्या रिलेशन देखो, सिमेट्रिक में हमें पता है ये रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ये भी होना चाहिए, तभी सिमेट्रिक बोल सकते हैं. आप देखेंगे तो इधर 1 कोमा 2 रिलेशन में है, सिमेट्रिक है तो 2 कोमा 1 भी रिलेशन में होना चाहिए था, बट वो नहीं है. देखो 1 कोमा 2 रिलेशन में है बट 2 कोमा रिलेशन में नहीं है. सिमिलरली 2 कोमा 3 रिलेशन में है, सो 3 कोमा 2 रिलेशन में है तो सिमेट्री होते था, बट 3 कोमा 2 भी उधर नहीं है. तो इफ फॉर एटलीस्ट फॉर एक एलिमेंट सही नहीं है तो पूरा सेट के लिए सही नहीं है. इफ ऐसे कोई भी एक सिंगल पेयर है, ए रिलेटेड टू बी है बट बी रिलेटेड टू ए नहीं है तो इट इज नॉट सिमेट्रिक. हो सकते हैं बाकी सबके लिए ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू ए उसके अंदर होगा, बट कम से कम एक को नहीं है तो इट इज नॉट सिमेट्रिक. सो इधर दोनों को नहीं है, 1 रिलेटेड टू 2 बट 2 इज रिलेटेड टू 1, 1 कोमा 2 रिलेशन में है बट 2 कोमा 1 रिलेशन में नहीं है. 2 कोमा 3 रिलेशन में है, 2 कोमा 3 रिलेशन में है उसका मतलब 2 इज रिलेटेड टू 3 बट 3 कोमा 2 रिलेशन में नहीं है, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक. अभी ट्रांसिटिविटी का कंडीशन ऐसे है कि ये सबको थोड़ा सा कंफ्यूजन होते हैं हमेशा, ये रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी. इफ one first element is related to second element is related to third element, then A should be related to C होना चाहिए. so मान है लीजिए, सर हाँ, so मान ट्रांसलेटिव लीजिए ऐसे A related to B and B related to C, ऐसे दो पेयर आपका रिलेशन में नहीं है तो द रिलेशन विल बी नॉट ट्रांसलेटिव. ऐसे दो पेयर नहीं है तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट रिलेशन विल बी ट्रांसिटिव. ठीक है, सी द डिफरेंस. अगर ये रिलेटेड टू बी है एंड बी रिलेटेड टू सी है, देन ट्रांसिटिव होना है तो ये मस्ट बी रिलेटेड टू सी होना चाहिए. व्हाट आई सेड इन द अदर स्टेटमेंट, if you can't find two numbers like this, A related to B and B related to C, ऐसे दो numbers, दो set of numbers आप नहीं निकल सकते उस रिलेशन से, ऐसे दो पेयर आपको नहीं मिलते हैं तो then by default that relation is transitive. अगर ऐसे टू पेयर है तो A related to B and B related to C, then A should be related to C होना ही चाहिए. Okay, so here look at this, 1 related to 2 है, then 2 related to 3 है, तो वैसे तो 1 related to 3 होना चाहिए रिलेशन में, बट 1 related to यस सर. रिलेशन में नहीं है, so it is not transitive. Okay, clear? यस सर. मान लीजिए ये दो नंबर उसके अंदर नहीं था, 1 Yes, sir. रिलेटेड टू 2, 2 रिलेटेड टू 3, ऐसे दो पेयर आपको नहीं मिल रहे. जैसे फर्स्ट एलिमेंट इज रिलेटेड टू सेकंड एलिमेंट इज रिलेटेड टू अनदर थर्ड एलिमेंट, ऐसे टू पेयर ऑफ नंबर्स, पेयर ऑफ एलिमेंट्स आपको नहीं मिला है तो बाय डिफॉल्ट द रिलेशन विल बी ट्रांसिटिव. अगर ऐसे टू पेयर आपको मिला है तो देन ट्रांसिटिव होना है तो फर्स्ट एलिमेंट शुड रिलेटेड टू थर्ड एलिमेंट. Okay, Good morning, Mr. Johnson and okay.
1 second. Okay, look at that. R is a relation R in the set of integers Z, in the set of integers, and relation is given like this. Relation is equal to set of all ordered pairs such that 2 divides A minus B. So we have to prove that this is an equivalence relation. So equivalence relation है तो first of all the relation should be reflexive, then symmetric and transitive. No, first reflexive. Reflexive है करके proof करने के लिए we have to prove that every element is related to that element itself. See, for every element A minus A minus A is equal to 0, 0, which is, or which 2 is, divides or 2 divides A minus B, or which is divisible A by. minus B, or which is divisible by. So A minus, that means this इसका मतलब है, that means A comma A belongs to that relation for all A belongs to Z. If you take any element from integers, say for example 1, then 1 minus 1 is 0, or if you take 2, 2 minus 2 is 0, which is divisible by 2. If you take any element, that element minus that element itself, A minus B. So A minus B is always, so A minus A is always 0, and which is divisible by 2. So that means the relation is, this implies R is reflexive. R is reflexive. Now we have to prove, or we have to check whether it is symmetric. So symmetric property say कि if A related to B, then B related to A होना चाहिए. So we will assume let A comma B relation में है. Let A comma B belongs to R. That means A is related to B. Then what it means, if A is related to B है तो इसका मतलब है A minus B is divisible by 2. Because that is a relation. Given relation is every ordered pair says that the 2 divides A minus B, or A minus B is divisible by 2. Now, since A minus B is divisible by 2, that means B minus A, it is also divisible by 2. A minus B divisible by 2 है तो B minus A minus B suppose 10 है तो B minus A minus 10 हो जाएगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा. So B minus A is divisible by 2, and B minus A is divisible by 2 मतलब B is related to A, or B comma A belongs to that relation. Symmetric. Yeah, that implies relation is R is symmetric. Now we have to check the transitivity. So transitivity, it says if A related to B, that means one element is related to second element. Second element is related to third element. Then the first element should relate to third element. So we'll assume let A related to B, A comma B belongs to R, and B comma C belongs to R. That means A related to B and B related to C. Now हमें check करना है और हमें prove करना है A is related to C. So this implies A related to B, or A comma B belongs to R, मतलब A minus B is divisible by 2, and B comma C belongs to R, or B related to C, मतलब B minus C is divisible by 2. Now we have to keep in mind what we have to prove. We have to prove that A minus C is divisible by
So how can we prove that from this step? The thing what we have to prove, that should be in our mind. We have to prove that the relation is transitive. So relation transitive है तो A related to B and B related to C, then A should be related to C होना चाहिए. A related to C मतलब उसका मीनिंग है A minus C is divisible by 2 होना Two. चाहिए. So this is the Yes. given thing we got from the given information. We got these two things, and from these two things, how we can say A minus C is divisible by 2? Is it possible to say that? If it is possible to say, then of course the relation is transitive. Is it possible to say like that? Think. Right now आपको पता है A minus B is divisible by 2 and B minus C is divisible by 2. उसमें से आप ये कंक्लूजन कैसे ड्रॉ कर सकते? How can you draw the conclusion that A minus C is also divisible by 2? No idea? Sir, we can consider No, a sir. variable No, question. sir. We can consider Variable question. no, from these only these two statements, A minus B divisible by 2. Now, you see, whenever we want to prove something, we have to prove it generally. If you take only one example and prove, it is only true for that example. Whenever we have to prove something, we have to prove it generally. But when we want to disprove something, we have to show only one example. That example is known as counter example. If for one example it is not true, it is not true in general. But if you want to prove something, we have to prove it generally. आपने जो बोला एग्जाम्पल है समझ गया, लाइक 2,4 बिकॉज इज डिविजिबल 2,4 आएगा बिकॉज 2 minus 4 इज डिविजिबल बाय 2. 4,6 आएगा बिकॉज 4 minus 6 is divisible by 2. Automatically 2,6 आएगा because 2 minus 6 is divisible by 2. I agree. So this is true for only this particular example. But for Jansan, sir. after the class you come and meet me. Huh? Sir, sure. So how can we prove this in general? ये तो एग्जाम्पल है, आई अंडरस्टूड. 2 रोहिणी ने बोला है कि ओके आप सर एग्जाम्पल्स ले से वेरियस एग्जाम्पल्स. सो 2 is related to 4, 4 is related to 6. So 2 is automatically related to 6 because 2 minus 6 is minus 4, which is divisible by 2. Agreed, right? Like that you can have many examples, but how can we prove it generally? A minus B by 2 is equal to X. See, simple way बोल सकते हैं ना, जैसे A minus B, if two numbers are divisible by 2, then their sum is also divisible by 2, right? Isn't it? Yes, sir. If two numbers are divisible by 2, then their sum is also divisible by 2, because if two add divisible by 2 मतलब even number. So if you add two even number, again you will get an even number. So if two numbers are divisible by 2, their sum is also divisible by 2. So that is why A minus B plus B minus C is divisible by 2. So minus B plus B cancel हो जाएगा, इसमें से आपको मिलेगा A minus C is divisible by 2. 2. So that implies A comma C belongs to R. That implies R is transitive. Transit. So now then last you have to conclude that since R is a reflexive, symmetric and transitive, comma, it is an equivalence
relation. Okay, so this is what you have to conclude. Is it clear? This is a way we prove. Yes, sir. So is it clear? Now here Yes, sir. actually, yeah, Here, actually, yeah. same thing I can say. Relation is set of all ordered pairs such that a minus b, or 2 divides a minus b, or a minus b is divisible by 2. This is your relation, and your set is set of all integers. So this is, now we have seen that this is an equivalence relation. Okay, so according to this equivalence relation, so I can divide the set integers into different parts. Divisible by 2 है तो क्या क्या हो सकते हैं? Remainder can be 0, remainder can be 1, isn't it? Remainder can be 0 हो सकते, remainder 1 हो सकते. So remainder 0 मतलब it is 2, 4, 6, 8, etc. Either minus 2, 0 is there, 0, minus 2, minus 4, minus 6, etc. Remainder 1 matlab we'll get a set 1, 3, 5, 7, 9, etc. Similarly, minus 1, minus 3, minus 5, etc. So based on this equivalence relation, I divided the entire set of integers into 2 sets. Say if I name this as a E1, so I just name this as E1, or this I name this as E2. You can see that all elements of, इसको लिए बहुत सारा specialty है. All elements of E1 are related to each other, isn't it? E1 में आप कोई भी element ले लो, उसका difference देखो, divisible by 2 है. 6 minus 4, 2. 4 minus 8, minus 4. Minus 4 minus 6, minus 10. If you take any 2 element in the set E1, they are related to each other. Not only E1, all elements of E2 also, they are related to each Itself. other. Each other. Okay, so you can just name E1, E2, or you can just A1, A2, whatever it is. You can give A1, A2. So here एक specialty ऐसे हमने देखा है कि all elements of AI means A1, A2. There are 2 sets, so A1, A2. In some example, there may be more than 2 sets. So here all elements of AI are related to each Each other other. for all I, isn't it? Now, another specialty देखो, आप इस सेट का फर्स्ट सेट का कोई भी एलिमेंट ले लो, सेकंड सेट का कोई भी एलिमेंट ले लो, कभी भी रिलेट नहीं है. कोई भी एलिमेंट, नो एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट is related to any element of second set. Just either 4, so either 5 liye to 4 minus 1 difference is 1, 4 minus 7 difference is minus 3, 4 minus 9 difference is minus 5, 4 minus minus 3, 4 plus 3 7. So you can see that
the difference is never divisible by 2. So you can see that no element of AI is related to any element of another set AJ. I is not equal to J. I and J are equal मतलब they are same set. इसका मतलब जो अलग अलग सेट है उसका एलिमेंट्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं. खुद का सेट के अंदर हर एक एलिमेंट को रिलेटेड है, बट एक सेट का एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट को रिलेटेड नहीं है. देन तीसरा आप एक पॉइंट देख सकते हैं कि यूनियन ऑफ ऑल AI you will get full set, जैसे integer और whatever it is full set है, just symbol use कर रहे, it is full set, isn't it? इधर set of इधर आपको मिलेगा A1 union A2 is equal to Z integers, करेक्ट. देखो इनका दोनों का यूनियन देखो, पूरा इंटीजर ही मिलेगा ना, करेक्ट. Yes, sir. या एंड और एक स्पेशलिटी है, एंड AI intersection AJ is always phi when I not equal to J. Means for different set के लिए कोई intersection point भी नहीं है. देखो इधर 4 प्रॉपर्टीज आपने देखा, 4 प्रॉपर्टीज, उसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज. एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन के आधार पर अब जो दिया वाला सेट को डिफरेंट सेट के रूप से लिख सकते हैं, डिफरेंट सेट A1 A2 ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं. वैसे स्प्लिट करते हैं कि उस स्प्लिटिंग के लिए सम स्पेशलिटी है. वो स्पेशलिटी ऐसे है कि ये एक सेट के अंदर जितना भी एलिमेंट्स है पूरा का पूरा एलिमेंट्स रिलेटेड है. सो एवरी एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स ऑफ AI आर रिलेटेड टू ईच अदर. एक सेट का एलिमेंट दूसरा सेट का एलिमेंट को कभी रिलेटेड नहीं है. दूसरा है कि इन दोनों का यूनियन जो भी जितना सेट, इधर 2 आया, कभी कभी 3 आते हैं, 4 आते हैं, व्हाट एवर इट इज. सो सभी सेट का यूनियन फुल सेट आएगा, बट इन दो सेट को और जो भी जितना भी सेट्स आएगा A1 A2 A3 जितना भी सेट्स आएगा उनके लिए कोई कॉमन पॉइंट नहीं है. ओके. Yes, sir. सो इसको बोलते हैं जैसे हर एक ईच AI, इसको ईच AI हर एक सेट आर कॉल्ड इसके लिए एक पर्टिकुलर नाम बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस. इक्विवेलेंट क्लासेस बोलते हैं. मींस उसमें से एक इक्विवेलेंस, एक सेट में एक इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उस इक्विवेलेंट रिलेशन के आधार पर कुछ इक्विवेलेंट क्लासेस होगा. इधर हम इसको डिनोट करते हैं रिमाइंडर 0, इसको हम ऐसे लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0, इसको कॉल करते हैं इक्विवेलेंट क्लास 0. इसको हम डिनोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट क्लास 1. सो these are known as इक्विवेलेंट क्लासेस. सो हर एक इक्विवेलेंस रिलेशंस के बेस पे देयर आर सम इक्विवेलेंस क्लासेस. उस इक्विवेलेंस क्लासेस का स्पेशलिटी हमने देखा, हर एक क्लास का एलिमेंट खुद को रिलेटेड है, हर एक एलिमेंट को रिलेटेड है. एक सेट का एलिमेंट दूसरा सेट को एलिमेंट को कभी रिलेटेड नहीं होगा. इनका यूनियन फुल सेट मिलेगा, इंटरसेक्शन हमेशा 5 होगा, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा. Yeah, so for this particular example, set of integers and your relation is A minus B is divisible by 2, it's an equivalence relation. हर एक equivalence relation के आधार पर there will be an equivalence class. So here there are 2 equivalent classes. They are equivalent class 0 and equivalent class 1. Okay, it is read as
equivalence class 0 or equivalent class 1 ऐसे बोल सकते हैं. And it's written like this, square bracket के अंदर 0, square bracket के अंदर 1. So this is another concept which is known as equivalence class. Okay, so इतना सिंपल इतना ही है, ज़्यादा डीप नहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं. सो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो देयर विल बी एन इक्विवेलेंस क्लास. अगर इसका रिवर्स भी ट्रू है, अगर आप कोई भी सेट को ऐसे अलग अलग सेट का यूनियन के रूप से लिख सकते हैं इन सच ए वे दैट जो भी सेट उसके लिए कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, पूरा यूनियन फुल सेट मिलेगा, देन उस इक्विवेलेंट क्लास के आधार पर देयर विल बी वन इक्विवेलेंस रिलेशन आल्सो. रिवर्स इज आल्सो ट्रू. इक्विवेलेंट क्लास है तो उस क्लास के आधार पर देयर विल बी वन इक्विवेलेंस रिलेशन. इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उस इक्विवेलेंस रिलेशन के आधार पर देयर विल बी एन इक्विवेलेंस क्लास. Okay, so I just want to discuss that equivalence relation and equivalent class, and tomorrow we'll do the exercise questions. And this year I think your syllabus is restored. Final confirmation is yet to come from CBSE. If your syllabus is restored, you have to study each and everything, but yet the final confirmation has to come from CBSE. Once it comes, I will tell you. Okay, clear? Yes, sir. Okay. Yeah, so see you in tomorrow's class then. Okay, sir. Yeah, take care. Bye bye.